Let's listen to Salman Khurshid. He's speaking at this time. हमारे देश को एक सूझबूझ के साथ और देश हित को सामने रखकर हमें नीति बनानी पड़ती है और ऐसी ही हमारी नीति है। प्रधानमंत्री महोदय ने उसको एक मार्गदर्शन दिया है और एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलता है प्रधानमंत्री महोदय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विदेश नीति को लेकर। और जो उनका एक मार्गदर्शन है और जो हमारी परंपरागत रूप से भारतवर्ष की एक छवि है और भारतवर्ष की एक सोच है और भारतवर्ष की एक विचारधारा है, इसमें एक और कड़ी बनकर इसी को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला है मुझे। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत सम्मान का ये अवसर और पद है। मुझे सरकार में काम करने के और अवसर मिले, लेकिन ये काम एक ऐसा काम होता है जिसे पूरे विश्व के सामने और विश्व दर्शन पर पहुंचकर और विश्व के सामने काम करके दिखाना पड़ता है। इसलिए चुनौती थोड़ी सी और बढ़ जाती है और जिम्मेदारी और दायित्व जो है वो और बढ़ जाता है। इसको सामने रखकर ही हम लोग अपनी ओर से कर सकते हैं वो करेंगे। और आशीर्वाद मिला है, प्रधानमंत्री महोदय का मिला है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिला है। मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं और देश की सेवा का जो ये अवसर मिला है इसको मैं भली भांति इस सेवा को मैं अर्पित कर सकूं और प्रस्तुत कर सकूं। सलमान जी, पॉलिटिकल क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन है बेसिकली आपसे टिप्पणी चाहता हूँ कि जिस तरह से आपकी छवि को डेंट करने की कोशिश हुई, कहीं न कहीं एक इन्फोर्समेंट है सोनिया गांधी की तरफ से या सरकार की तरफ से, और इसलिए आपको ये एलिवेशन जो है एलिवेशन के तौर पर देखा जा रहा है। आपको ये जब मंत्रिमंडल में कोई होता है तो कौन सा दायित्व सौंपा जाए और क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये हमारा नेतृत्व तय करता है समय समय पर। और ये देखकर ये तय किया जाता है कि किसकी क्षमता कैसी है और इस समय कहां पर किस चीज की आवश्यकता है। तो ये समझ लिया जाए कि इसका किसी और विषय से कोई संबंध है, मैं समझता हूं ये उचित नहीं होगा। हर चीज हम सरकार में सरकार के बाहर जो कहा जा रहा है और करा जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया में करें तो फिर सरकार दूसरों की कठपुतली बन जाती है। सरकार को जो करना है सरकार अपना दायित्व समझती है और हमारा नेतृत्व जो है वो जो देश के लिए किस समय क्या उचित है उसको देखकर हमारा नेतृत्व ये निर्णय लेता है। रही बात कि किसी भी विषय को लेकर किसी ने चर्चा छेड़ी है, आम जनता में जब भी कोई विषय छेड़ा जाता है, कोई भी चर्चा होती है तो उस चर्चा का संज्ञान तो हम लोग लेते हैं, लेना चाहिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन संज्ञान लेना और उससे प्रभावित होना इसमें बड़ा अंतर है। तो एक सुलझे हुए मन से कब हमको देश हित में क्या निर्णय लेना है वो हमारा नेतृत्व लेता है और मैं इसको समझता हूं, इस बात को यहीं तक रखना चाहिए कि नेतृत्व देश हित में जो करता है उसको हम आगे बढ़ाने का और उसको और अच्छी तरह से देश के सामने पहुंचाने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। Khurshid, if we can just ask him, 20 years later, you're back in the Ministry of External Affairs. What do you think the biggest challenge for you is going to be? I have no idea. The world has changed a lot since I was last in the Ministry of External Affairs. Of course, as a person alive to what is happening in the world and the implications of that for our country and the dramatic changes that have taken place in the world, and how foreign affairs has shifted greatly towards economic issues, on security issues, and in more recent years on security issues that relate to some very unwholesome dimensions such as cross-border terrorism, and the cross-border terrorism also in some extremely intricate ways now that truly the globe is becoming a village. These are all very, very major challenges, and we've moved way, way beyond
where we were 20 years ago. Our international profile has changed enormously. Our engagement of the world has increased in many dimensions, and therefore I think what's required is a quick study of where we are, get properly briefed by both the officers of the ministry as well as other people who have played a very important role in Indian foreign policy, and I can name many such people who are part of think tanks now and who've been important members of foreign policy establishment in our country. I think I have a lot of homework to do. Let me do that homework first. You're joining the Cabinet Committee on Security just 2 weeks really after all the allegations against the Zakir Hussain Trust. Do you see this move that you are now going to be part of the CCS as an endorsement of your stand, support really from party high command? Well, I don't know why you had any doubts that motivated allegations against anyone. Forget about me, but against anyone in our establishment or our government can make us go down on our knees and ask for forgiveness. If we do any wrong, we have a conscience. We will immediately, any one of us, will immediately respond to our conscience. If we need to be shown direction, we have the most outstanding leadership in the world to tell us what to do. I think the question also strikes in the other direction. Was a lot of this being done to narrow down options for our government? Was a lot of this being done to eliminate or bypass people that pose a challenge to forces that, I'm sorry, I believe are not very positive forces for our country? But this is a democracy and everybody has a right to say what they want to say, but democracy which is based on rule of law, and I hope that everyone will continue to respect the rule of law, and those who do not respect the rule of law will have the rule of law show them the path and show them the way. As I said, our leadership shows us the way. So is there any specific that you intend to bring to the platter as far as foreign ministry is concerned? It's too early for me to say anything to you. My understanding of foreign policy, as I said, of 20 years ago, and the foreign policy that we need to promote today and push today has vastly changed. In foreign policy jargon and lexicon, we often speak of theologies in foreign policy. I think this is a time when we could take a cue from the Prime Minister's general advice that we have to do out-of-the-box thinking. And out-of-the-box thinking for institutional management within the field of domestic endeavor is not something that must be restricted there. I think that out-of-the-box thinking and beyond theology, to think that the great opportunities that the world offers today of peace, prosperity, but also the great challenges to peace and prosperity in our world, I think are things that I will want to address. They have already been addressed in a very remarkable way by my predecessors. I would want to take their story forward. Obviously, conscious that the overall framework is very closely designed and created by the leadership of our party and the leadership of our government. And in that sense, I become the extended arm of the vision of the Prime Minister and the Congress President. सर, पूरे कैबिनेट रिशफल को आपकी तरफ देखते हैं 2014 में चुनाव भी है और इसको पूरे देश इस तरह से यूथ को भी लिया गया और भी आंध्र प्रदेश से भी कई लोगों को इंक्लूड किया, किस तरह से आप देखते हैं पूरे मैं ये मानता हूँ कि ये और लोगों की भी राय थी, हम लोग एक साथ बैठे थे कि एक व्यापक परिवर्तन की अपेक्षा पूरा देश कर रहा था। होता है जब 2-2.5 साल निकल जाते हैं सरकार के और जब मिड पॉइंट आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा हाई पॉइंट होता है, कभी कभी प्लेटो पहुंच जाता है और कोशिश की जाती है कि एक नए हाई पॉइंट की ओर हम बढ़ें। और उसमें जो विशेष हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारी
विशेष योजनाएं हैं, उनका अगर मैं उल्लेख करूं तो घंटा भर लग जाएगा। लेकिन उन कार्यक्रमों और विशेष योजनाओं का फेस कौन बनेगा, हर क्षेत्र में, हर मंत्रालय में फेस कौन बनेगा, उसमें ऊर्जावान चेहरे हों, नौजवान चेहरे हों, जो ये कह सकें और ये संदेश दे सकें कि हम आने वाले कल का संदेश लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि इसको बहुत बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ और बहुत गहराई के साथ प्रधानमंत्री महोदय ने और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने सुनिश्चित किया है और इससे देश का उत्साह वर्धन होगा, अवश्य होगा, पार्टी को और बल मिलेगा और मैं मानता हूं कि 2014 की जो हमारी तैयारी है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।